Good morning, everyone. How are you all? Hope so that you all are fine at your house. So, actually, we have already completed our chapter number 2 in our textbook, and we have already started our term 2 with chapter 2, and we are going to complete this chapter 2 today itself. So, कल से हम लोग chapter number 8 शुरू कर सकते हैं, ठीक है? So, tomorrow we will do chapter number 8. So for that, first of all, let's understand the important notes which are given in our revision sheet so that we can complete it as soon as possible. All right. The first point is human beings have two sets of the teeth. We know that there are two sets of the teeth. One is temporary and one is permanent set. Actually, there are four types of teeth, which are the incisors, canines, premolars and molars. A tooth has two parts. Tooth के कितने parts होते हैं? दो parts होते हैं. Crown and the root. कितने पार्ट्स होते हैं? क्राउन और रूट. जो हमें दिखता है दैट इज क्राउन एंड जो हमें नहीं दिखता दैट इज रूट. Then comes the main parts of the digestive system. Now, which are the main parts of the digestive system, which plays an important role in the digestion process? So they are starting from our mouth. Then comes the food pipe, or you can call it as an esophagus. Then comes the stomach, small intestine, large intestine, liver, and at last it comes the anus. Actually, we have already learned something about the microbes. So, which are the types of the microbes? Virus, bacteria, fungi, and protozoa. These are the four main types of the microbes. Actually, what are microbes? They are really very, very small living beings which are not been able to have a look with the help of our naked eye. So, what do we require? We need a microscope for having a look over the microbes. Then we have studied that there were two types or two sets of the teeth. Sorry, not types. Two sets of the teeth: permanent set and temporary set. So temporary teeth is also known as a milk teeth. And the white part which is been seen in the tooth in the outer side, that is known as the enamel. What do we call it? We call it as a enamel. हम उसे क्या बुलाते हैं? We call it as a enamel. The process by which food is broken down into a simpler form so that it can be easily taken in or absorbed by the body is called digestion. Digestion किसे कह सकते हैं? कि एक ऐसी प्रोसेस जिसकी वजह से फूड को हम ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर फॉर्म के अंदर और वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है या अंदर चला जाता है बॉडी के विद द हेल्प ऑफ डाइजेशन. मतलब डाइजेशन के हेल्प से हम उसे डाइजेशन कहते हैं कि जिस प्रोसेस से खाना जो है वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाए, सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाए और इजीली वो बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर सके, दैट इज नोन एज एन डाइजेशन. हम उसे डाइजेशन कहते हैं. देयर आर वेरियस ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर हेल्प इन डाइजेशन. डाइजेशन के लिए कोई एक ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता और यू कैन से कि एक चीज़ या एक ऑर्गन से इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव द डाइजेशन प्रोसेस. सो देर आर द वेरियस ऑर्गन्स विच आर वर्किंग फॉर द डाइजेशन प्रोसेस बट दे ऑल वर्क साइमल्टेनियसली. दे ऑल वर्क इन एंड कोऑर्डिनेशन so that the process goes very smooth. These organs together forms the digestion. So all that organs together form a digestive system. All right. Harmful microbes are called germs. Actually, you have been in contact with the term germs. Germs का आप लोगों ने अभी रिसेंटली पिछले एक साल से तो आप बहुत ही ज़्यादा सुन रहे हो कि जर्म्स आर हाउ मच हार्मफुल. दे आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स. और वो कितना अनहेल्दी होता है हमारे लिए. दे कैन मेक अस फॉल इल. सो व्हाट वी शुड डू, एंड यू आर नाउ ऑल आर अवेयर दैट व्हाट आर द स्टेप्स विच वी शुड टेक for being protected from the germs. That we should wash our hands, we should eat the healthy food, we should eat the hygiened fresh food, we should not eat the unhealthy food, or you can say the food which was been prepared 1 day ago or 2 day ago. You should not eat that. You should eat the fresh foods. Microbes are very small things that cannot be seen with the naked. छोटी चीज़ें होती है विच जो हम आँखों से नहीं देख सकते हैं. Then comes we were going to start our exercise, and in exercise the first one is match the following. So in that, let us move for the first one, which is the mouth. That mouth can be directly connected with the saliva.
It can be directly connected to the saliva because the saliva is being produced in the mouth itself. Then comes the food pipe. So what is the food pipe? Food pipe is a tube like the organ, we know that, and it is also known as an esophagus. Am I right? Then comes the stomach. What is stomach? Stomach is a sac-like organ. Means you all know that what is a sac bag. So it is the sac-like organ. Then comes the small intestine. So what is small intestine? Small intestine is the absorption of the useful substances. मतलब जो भी useful substances है उसके absorption को क्या कहते हैं? We call it as a small intestine. And last one is anus. So where the anus has been helpful? Anus has been helpful for removing the feces, means the waste. We have already defined the feces as the waste products when we were learning about the digestive system. Am I right? So feces, what are the feces? Feces are being removed with the help of the organ which is known as an anus. So next is the true or false. So in true or false, the first question is microbes cannot be seen with the naked eyes. Yes, हम microbes को अपनी आँखों से देख नहीं सकते हैं. So first one is true. We should keep our teeth clean. Obviously we have to keep our teeth clean क्योंकि अगर आप लोगों को cavity free वाली teeth चाहिए then you have to keep your teeth clean. The third one is all microbes cause diseases. सारे microbes क्या disease cause करते हैं? No. सारे माइक्रोब्स डिजीज कॉज नहीं करते हैं. माइक्रोब्स आर हैविंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बोथ. सो दिस इज अ फॉल्स वन क्योंकि सारे माइक्रोब्स डिजीज कॉज नहीं करते हैं. Tuberculosis is caused by the fungi? No, tuberculosis is been caused by bacteria. So fungi has no relation with the tuberculosis. So it is a false one. We should always wash our hands. हमें हर बार हमारे hands को wash करना चाहिए. Yes, it's true. क्योंकि जितनी बार अपने hands को आप wash करोगे उतनी ही बार जितने भी germs है जो कि आपके hand में present है वो मर जाएंगे. So it's really very important for you to wash your hands whenever you get the time, and especially before you eat anything you should wash your hands. That is the premost thing which we have learned in this corona time. Then comes the third one, fill in the blanks with the correct words. So the first one is there are blank teeth in the temporary set of the teeth. अगर हम लोग temporary set of the teeth की बात कर रहे हैं तो कितने teeth होते हैं उसके अंदर? 20, जिसे हम मिल्क टीथ भी कहते हैं. लेकिन क्या परमानेंट सेट ऑफ द टीथ में कुछ होता है? कितने टीथ होते हैं परमानेंट में? 32. यस, वेरी गुड. द ब्लैंक्स फॉर्म्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ द टूथ. ये जो है वो सेंटर पार्ट है टूथ का. व्हाट इज दैट? दैट इज द पल्प. ब्लैंक्स कॉज डिजीज लाइक रिंगवॉर्म एंड एथलेट्स फुट. रिंगवॉर्म और एथलेट फुट्स कौन फॉर्म कॉज करता है? फंगी. ब्लैंक्स कैन बी यूजफुल और हार्मफुल टू द ह्यूमन बींग्स. अभी ये यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है. सो व्हाट आर दे? दे आर द माइक्रोब्स. And now comes our last question, which is the question and answer. And describe the structure of the tooth using diagram. मैंने ये आप लोगों को आपकी नोटबुक में भी लिखवाया था, ये भी लिखवाया. दोनों के आंसर्स वेरी कर सकते हैं. जो मैंने ही लिखवाया है आप कुछ भी लिखोगे, इट्स ऑल राइट. आप अपने हिसाब से लिखोगे इन योर ओन वर्ड्स में. अगर आप यही चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हो, आई डोंट हैव एनी इश्यूज़ कि आप ऐसा क्यों आप लोगों ने मैंने जो लिखाया वो नहीं लिखा है. यू कैन राइट एवरीथिंग अबाउट योर ओन. आप अपने खुद का लिख सकते हो. बस the meaning should not be changed, so or else everything is all right, perfect. So here comes the first question. Describe the structure of the tooth using diagram. So first of all I wrote that the white part on the outside of the tooth, that is known as an enamel. Gums are the one who is holding the teeth into their places. So it is the hardest part of the human body. Human body का सबसे hardest part है teeth. So below enamel what lies? There lies a pulp, and which is pulp is full of blood and blood vessels and nerves. So what we studied that the white part is gums,
teeth is been holded by the no, white part is enamel, gum holds the teeth in their place, and below the enamel there is a pulp, and inside the pulp there are nerves and blood vessels, and behind there is a space given to you where you have to draw down the diagram which is given on the page number 23 in your textbook. All right, so everyone please complete it at your home. It has been your homework. Then comes the second question, what is digestion, and explain in short. ऐसा मैंने लिखा था उधर, लेकिन afterwards when I just saw in textbook, so what happened that there is a no description of the digestive system given to you. मतलब आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आंसर में एक्सप्लेन करने का नहीं पूछा गया है, तो अगर आपको नहीं पूछा गया है then why shouldn't you mug it up. So आप just mug up करो, उससे बेहतर है कि जो भी आपको दिया गया है आप उतना परफेक्टली कर लो. So I have कटेड दिस क्योंकि वो आंसर फिर बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सप्लेन करने जाएंगे देन इट विल बी रियली अ लेंथी वन एंड इट विल बी रियली हार्ड फॉर यू. सो आई डोंट वांट एनीथिंग विच इज हार्ड फॉर यू, सो आई हैव जस्ट कटेड इट डाउन. सो यहाँ पर आपको सिर्फ डाइजेशन की डेफिनेशन लिखनी है. द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर फॉर्म, सिंपलर फॉर्म, सो दैट इट कैन बी इजीली टेकन इन और एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड एज एन डाइजेशन. हम इसे डाइजेशन कहते हैं कि जिस प्रोसेस से खाने को हम ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर फॉर्म में, एंड देन व्हाट वी डू इज दैट इट कैन बी इजीली और एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी एंड वी कैन गेट द न्यूट्रिएंट्स, दैट इज नोन एज एन डाइजेशन. And now comes the last question, which is the question number 3. Name any 4 microbes and 2 diseases each of them cause. तो यहाँ पर मैंने तो सबसे पहले चारों के नाम लिख लिए हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी एंड प्रोटोजोआ. एंड व्हाट आर दी डिजीज caused by them? By virus, the polio and common cold has been caused. By bacteria, typhoid and cholera. Fungi causes the ringworm and athlete's foot, and protozoa causes dysentery and malaria. This topic has been given in your textbook in chapter number 2. This is the last topic. आप यहाँ पर कोई भी 2 disease के नाम लिख सकते हो, मैंने ये लिखा है. It's not compulsory कि you have to just mug it up and you have to copy it down. You can write any disease name which are caused by them, but at least be careful कि वो उसी के disease हो, दूसरे के आप interchange मत कर लेना, or else you will lose your marks. So that's all for our chapter number 2, and from tomorrow we are going to start our chapter number 8. Alright, so be ready for chapter number 8. If you have any doubt in this, make yourself free to ask. Thank you very much.